Hello students. So in this video we'll try to cover your analog electronics and OPAMP, that is operational amplifier. OP is the operational AMP, operational amplifier, OPAM. So I will try to cover your 5 chapters in this video. So from your chapter number 1 to chapter number 5, PN junction diode, special semiconductor devices, rectifier circuits and filters, transistors and transistor circuits. And also we'll try to discuss chapter number 6, 7 and 8 in our next video. So before starting this subject, so तमको किछि briefly basic electronics विषय जानिबा दरकार. एनालॉग इलेक्ट्रोनिक्स पढ़िया पूर्व तुमको टिके बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स रे फर्स्ट सेमिस्टर रे जेडा पढ़ितला सेडा टिके बेसिक ओवरऑली मु टिके क्विकली कहि दउ सेडा टिके तुम दरकार. ओके, सो मोस्ट ऑफ द तमरा सॉलिड्स जो अछि सॉलिड्स उडाको mainly you can categorize into 3 parts, that is conductor, semiconductor and insulator. Conductor, semiconductor and insulator. So in conductor okay, so conductor कोडा कहबा जो एलिमेंट रे current flow easily हे परिबो, that is like your what iron, silver, aluminium, सेउडा सब जा तमरा conductor. Conductor means current easily flow हे परिबो. Similarly you have insulator कोन अछि ना, insulator रे बिल्कुल current flow हबो नै. जन के एग्जांपल हैला वुड हैला, प्लास्टिक, ग्लास, एवडा करे इंसुलेटर, एवडा को इंसुलेटर कहबा जोडा रे करंट फ्लो हबो नाही. बट in electronics we will mostly use semiconductor like a semicircle, that is not a full circle. जिनकी semicircle कोन ओडे complete circle नहीं, अधा ओडे. Similarly semiconductor कोन हबो, the element whose property lies between insulator and conductor. Conductor and insulator भितरे जार property टा रहउजे सेटा होजे semiconductor. Means it's not a conductor, it's not a pure conductor, it's not a pure insulator. So it is partially conductor, partially insulator, that is semiconductor. Okay, semiconductor विषय रे हम further discussion करिवा. So in any type of elements, the tiny particle is called your atom. Atom होची तमरा छोटा particle दा होची atom. Atom तमरा जो अछि atom ना consist of a inner side रे तमरा atom रे कोन अछि, atom रे तमरा अछि nucleus अछि. Inside the nucleus nucleus भीतर तमरा कोन अछि ना protons अछि, protons, and you are having neutrons. Protons जो अछि, protons रो positive charge carrier, protons होछि कोन ना positive charge carrier. Protons होछि तमरा positive charge carrier and electrons होछि तमरा negative charge carrier. And nucleus रो surrounding रे बाहर कोन होछि तमरा electrons are moving into such a manner in 2n square law हिसाब रे follow माने electrons डाको revolve करछन्ती. सो तमे क्लास 9 10th रे भी पढिथिबो, बोर्स एटॉमिक मॉडल हैला न केमिस्ट्री रे भी पढिथिबो. 2n square where n is the number of cells starting from 1 2 3. okay, एवडा. So n जगह 1 पुट कले केते होची 1 square 1, so 2 into 1 2 होबो, कॉमा 2 पुट कले n जगह 2 पुट कले 2 रो स्क्वायर 4, 4 into 2 8. नेक्स्ट केते 3 रो स्क्वायर 9 into 2 केते 18. so 2 18 2 8 18 एवडा तमरा कंटिन्यू चलिबो. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जा कोन होची ना, इलेक्ट्रॉन्स जा बाहर तमरा सराउंडिंग जो ऑर्बिट चारिपटे रिवॉल्व करछि. ओके, इलेक्ट्रॉन्स डाको रिवॉल्व करछि इन 2n स्क्वायर मैनर. ओके, सो एडा इले तमरा एटम रो कंस्ट्रक्शन, एटम रो बेसिक कंस्ट्रक्शन. सो नाउ व्हाट इज वैलेंसी?
ओके बैलेंस कौन बैलेंस हो बैलेंस डेफिनेशन हो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे जेतरा इलेक्ट्रॉन्स अछि ताको हमें कहबा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके वैलेंसी और द electrons we can call valence electron okay so the energy possessed with this valence electron we can say valence band okay similarly valence band ro next jo higher band hoji that is called here conduction band okay so most of the electrons are present in valence band most of the electrons are present in valence band so तार जो हायर बैंड ऑफ एनर्जी सेटा होची कंडक्शन बैंड सेटा होची कोन ना कंडक्शन बैंड सो इलेक्ट्रॉन्स जदी तमरो बैलेंस बैंड रो मूव करिया गुडी की कंडक्शन बैंड को देन ओनली तमरो एलिमेंट रे कोन बा करंट फ्लो ओके करंट कोन फ्लो बुझा पड़ेला सो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड विषय बुझियला सो बैलेंस कोन ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे जितरा इलेक्ट्रॉन्स रो सेटा होची बैलेंस ओके जदि आउटर मोस्ट रे तमरो इलेक्ट्रॉन्स रोच मनर दीडा इलेक्ट्रॉन्स मनर रोच तो हम डाई एटॉमिक कहि परिबा ठीक अछि डाई एटॉमिक कहि परिया और तीनटा इलेक्ट्रॉन्स रहबा ट्राइवैलेंट कहबा ट्राइवैलेंट ओके कोन कहबा ट्राइवैलेंट आउटर मोस्ट रे तीनटा रहले ट्राइवैलेंट कहबा चारटा रहले कोन कहबा टेट्रावैलेंट so these are your covalent bond such type of atoms गुडा तम यदि रहिबो so से माने भितर कोन बना covalent bond रहइबो ओके covalent bond रहइबो केमिस्ट्री तम पढिथियो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग so covalent bond रहउछ so डायटोमिक हेला तम ट्राइवैलेंट हेला टेट्रावैलेंट रे यदि पांचटा रहइबो ताको हम कोन कहबा पेंटावैलेंट एटम कहबा कोन कहबा पेंटावैलेंट कहबा पेंटावैलेंट ओके पेंटावैलेंट एटॉमिक एटम बोली कहबा बुझियला ओके सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स तमर जो प्रोटॉन रो कांसेप्ट किछि नाही इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन जगह हमर ओडे कांसेप्ट अछि सेडा होय तमर कोन ना होल्स ओके जदि मोडा बुझा जाय बे ओडे फिजिकली मीनिंग दे बुझोछि सपोज फॉर एग्जांपल सपोज हमर अछि चारटा मनर चेयर अछि फोर चेयर्स चारटा चेयर अछि मनर suppose सपोज देखो चारटा मनर चेयर अछि 1 2 3 4 चारटा मनर चेयर अछि ओके सो सपोज मनर तीन जण आसले तीन जण लोक जदि आसले एडी जण बसला एडा जोड़ा कि तमरा फांका रह गेला ठीक अछि गैप रह गेला जोड़ी कि वैकेंट अछि सेडा हमें कहया होल्स ओके सेडा हमें होल्स कहबा सिमिलरली सपोज तमरा इलेक्ट्रॉन्स रो जो नंबर्स अछि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एटम्स all the atoms are neutral means what number of electrons equal to number of protons और number of protons कोन इक्वल रहइबो सपोज यदि हमें कहबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस अछि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम अछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि कम अछि दैट मींस कोन प्रोटॉन संख्या अधिक अछि बट हमें सेला कोन कहछे गोटे इलेक्ट्रॉन्स आसी पारिबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम अछि फॉर एग्जांपल मनर गोटे इलेक्ट्रॉन कम अछि गोटे इलेक्ट्रॉन कम अछि माने गोटे इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करि पारिबो राइट गोटे इलेक्ट्रॉन पे स्पेस अछि दैट मींस प्रोटॉन्स नंबर अधिका बट हमें प्रोटॉन्स नंबर अधिका न कहि कोन कहछे ना होल्स अछि होल्स माने इलेक्ट्रॉन्स रही पारिबो ओके सेडा हमें होल्स कहछी सो प्रोटॉन रो कांसेप्ट बिल्कुल नाही इलेक्ट्रॉनिक्स रे तमरो कांसेप्ट अछि होल्स एंड होल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज कैरियर electrons having negative charge carrier and holes having positive charge carrier okay positive charge carrier next है तमरा जो सेमीकंडक्टर types of semiconductor mainly two types one is pure form of a semiconductor that is intrinsic semiconductor out impure form of a semiconductor extrinsic semiconductor impure form of a semiconductor means
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहवा ठीक अच्छे एक्सट्रिंसिक सो ये सब गुड़ा तुम दरकार ना बट यहाँ बुझा दरकार फर्दर तुम जानापी निहती बुझा दरकार सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होची दैट इज द impure form of impure form of a semiconductor is called extrinsic type of semiconductor सो कौन से ना किसी इम्प्यूरिटी आम ऐड कर इम्प्यूरिटी ऐड करछे कौन से इम्प्यूरिटी कौन ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज करया पय कौन कराउछे किछि इम्प्यूरिटी ऐड कराउछे इम्प्यूरिटी इन द सेंस आइदर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बा ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी किछि ऐड करबा ठीक अछि ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करबा ओके सो क्लासेस रे तमर टिके प्रॉब्लम हे पारे नॉइज गुडा हे पारे हा ठीक सो नॉइज बैकग्राउंड नॉइज गुडा तमे इग्नोर करियो सो जो एडिंग इम्प्यूरिटी एडिंग करिवार प्रोसेस को कहउछि कोन ना डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द impure semiconductor को ऐड impure semiconductor तमने डोपिंग ऐड करिवार प्रोसेस ता को इम्प्यूरिटी ऐड करिवार प्रोसेस को कहउछि डोपिंग बुझिला okay so extrinsic semiconductor again कौन अछि ना two types of semiconductor one is n type semiconductor one is n type semiconductor and second one is the p type semiconductor n type semiconductor and p type semiconductor okay n type semiconductor and p type semiconductor so generally semiconductor having tetravalent atom means outermost रे केतरा इलेक्ट्रॉन रहइबो 4 electrons tetravalent okay tetravalent होची तमरा 4 electrons रहउची outermost रे and semiconductor किछि examples होची silicon and germanium so most widely used semiconductor silicon and germanium semiconductor use होची okay so तमरा हिला n टाइप सेमीकंडक्टर और p टाइप सेमीकंडक्टर कोन से विषय डिस्कशन करे ओके सो मैं कोन कहली तमर जो सेमीकंडक्टर अछि आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन्स अछि यू आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ओके यू आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ओके सो केतरा इलेक्ट्रॉन रहला 4टा इलेक्ट्रॉन रहला ठीक अछि okay so you are having 4 electrons here okay 4 electrons germanium okay germanium जो अछि केतरा इलेक्ट्रॉन्स अछि आउटर मोस्ट केतरा अछि 4टा अछि आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन्स अछि 4टा अछि देखि पाछो आउटर मोस्ट रे 4टा लेखे इलेक्ट्रॉन्स अछि 4टा लेखे इलेक्ट्रॉन्स अछि ओके सो आमे कोन करले ना आर्सेनिक गुडा एलिमेंट ऐड करले व्हिच इज पेंटावैलेंट impurity means outermost केतरा इलेक्ट्रॉन्स थिबो 5टा इलेक्ट्रॉन्स थिबो केतरा 5टा so 1 2 3 4 and 5 केतरा 5टा इलेक्ट्रॉन अछि outermost केतरा इलेक्ट्रॉन्स अछि 5टा इलेक्ट्रॉन्स अछि जेति 5टा इलेक्ट्रॉन्स अछि so and तमरा कोन हबा तमरा कोवैलेंट बॉन्डिंग हे परिबा आराम से ओके कोवैलेंट बॉन्ड हे जीवा एडी देखा बॉन्ड उडा देखो एडाडा बॉन्ड हेला ठीक अछि एडाडा बॉन्ड हेला एडाडा बॉन्ड हेला एडाडा बॉन्ड हेला सो ए जो इलेक्ट्रॉन्स ता एक्स्ट्रा एडी पळी पडला एक्स्ट्रा अछि सो दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and free electrons that's why this type of semiconductor is called n type semiconductor okay n type semiconductor such type of pentavalent impurity उडा कोन कोन को टाइप रे pentavalent impurity ऐड करि परिबा arsenic हेला antimony bismuth phosphorus these elements are called pentavalent impurity pentavalent कोन n type semiconductor विषय बुझिला so n type semiconductor रे कोन हला ना free electrons रहला okay so majority charge carrier most of the charge carrier n type semiconductor कोन हो ना free electrons a free electron charge carrier कोन negative that's why this is n type n stands for negative okay n type semiconductor बुझिला सो एडी कोन अछि ना जेहेतु गुटे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा अछि सो दिस टाइप ऑफ एटम कैन डोनेट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स
सो सच टाइप ऑफ एटम्स को हमें कौन कहबा डोनर इम्प्योरिटी ओके डोनर एटम और डोनर इम्प्योरिटी कहि परिबा डोनेट करि परिबो ओके ए जगह रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोन इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अधिक रहइबो कोन इलेक्ट्रॉन्स हला इलेक्ट्रॉन जदी अधिक रहइबो किछि ना किछि तमरा होल्स भी रहइबो सो होल्स हेला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी माने लेस मेजॉरिटी माने मोर एक्स्ट्रा अधिका ओके इलेक्ट्रॉन्स अधिक रहला और होल्स कम रहला बुझियला एडा तमरा एन टाइप सेमीकंडक्टर Similarly, p-type semiconductor case रे कोन instead of pentavalent impurity पांचटा जगह हम जदी दरकार केतरा एक्चुअली चारटा दरकार आउटर मोस्ट रे जो जर्मानियम हेला नल सिलिकॉन आउटर मोस्ट रे केतरा थाउची चारटा थाउची सो आउ चारटा दरकार स्टेबल होवा पई जानि जे तमे क्लास 9 10 रे पढिथिबो तमरो ओके सो जो आउट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट उडा कोन होचन ना आउटर मोस्ट रे 8टा इलेक्ट्रॉन्स हले से माने कोन हेबे ना स्टेबल कंडीशन हेबे सो दैट्स व्हाई तांकर ऑलरेडी सेमीकंडक्टर 4टा इलेक्ट्रॉन्स अछि आउ 4टा दरकार किंतु अमेरिकन गले 5टा मेसेज देले 5टा ऐड कर देलो गुटे एक्स्ट्रा बळी पडला बुझियला सिम इंस्टेड ऑफ 5 हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करिया दैट इज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यदि ऐड करिबा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करले कोन हबो गोटे इलेक्ट्रॉन्स दरकार पड़िबो राइट गोटे इलेक्ट्रॉन्स दरकार देख गैलियम इज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी 1 2 3 सो तीनटा जगह रे तीनटा रो देडा बॉन्डिंग हेला 1 2 3 तीनटा बॉन्ड हेला आ गोटे बॉन्ड क्रिएट करा पे एडा गोटे होल अछि मींस कोन गोटे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्ट करि पारे राइट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स गोटे दरकार एडी नीड अछि माने कोन ता पे स्पेस अछि कोन होल्स अछि होल कहबा आ होल रे तमर पॉजिटिव चार्ज कैरियर ओके सो ए जगह रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोन हबो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हबो होल्स होल्स अधिक रहइबो आ माइनॉरिटी कम कोन रहइबो इलेक्ट्रॉन्स टा लेस रहइबो बुझियला सो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी सब कोन हम ऐड करि परिबा गैलियम इंडियम बोरोन ए सब हम ऐड करिबा जेहेतु गुटे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करि परिबा आको रिक्वायर अछि सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स बुझियला ना हमें टिके सिलेबस विषय डिस्कशन करिया फर्स्ट चैप्टर जदी देखिबा फर्स्ट सब चैप्टर देखिबा ओके फर्स्ट चैप्टर हो तमरा पीएन जंक्शन डायोड ओके पीएन जंक्शन डायोड सो जेहेतु पीएन जंक्शन कोन ना पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअली अछि दैट्स व्हाई तुमको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर दरकार बुझिया दरकार तापर जाई रे पीएन जंक्शन बुझी पारिबो अदरवाइज डायरेक्टली यदि पीएन जंक्शन कहबी बुझी पारिबो नाही दैट्स व्हाई तुम टिके ब्रीफली मो बुझे देली तुम कौन कौन दरकार अछि ओके सो फर्स्ट चैप्टर रे हमर डिस्कशन करिया रे कोन अछि वन इज तमर वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट 15 मार्क्स रो क्वेश्चन आस पारे ओके सेकंड क्वेश्चन अछि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड सो दिस इज अगेन वन मोर 5 मार्क्स क्वेश्चन नेक्स्ट एला तमर एडा गोटे 5 मार्क्स क्वेश्चन आसेला आसी जीवो जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन रो डिफरेंस पचारि पारे एग्जाम रे अदरवाइज इंडिविजुअल जीनर ब्रेकडाउन नला एवलांस ब्रेकडाउन गोटे क्वेश्चन पचारि पारे सो एडी आ गोटे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन हेला नेक्स्ट कहला कोन ना क्लिपर एंड क्लैंपर सो एडा गोटे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन हेला सो हमें डिस्कशन कौन करबा चैप्टर हमें डिस्कशन करिया पीएन जंक्शन डायोड रो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट कौन अछि ना नी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज ओके आ पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज एगुडा किछ अछि जोडा कि 2 मार्क के क्वेश्चंस आसी पारे ओके आ जीनर ब्रेकडाउन एवलांस ब्रेकडाउन एंड पीएन जंक्शन पीएन डायोड क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग क्लिपर सर्किट आ क्लैंपर सर्किट क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग ओके सो एती होची तमर चैप्टर 1 ओके सो एडा चैप्टर 1 विषय में डिस्कशन करिया सो तुम जहाँ टे फंडामेंटल दरकार पी टाइप कौन एन टाइप कौन से विषय तुम आइडिया आस जाए ओके सो फर्स्ट इला पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग ओके पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग तापर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ओके पीएन जंक्शन कहले गोटे डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मर्ज कर देले सेडा जे पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐड कर देबा ऐड करले एडा जियो गोटे जंक्शन है गेला एडा पीएन जंक्शन और इकन से पीएन जंक्शन डायोड और पीएन सिंपली पीएन डायोड तार सिंबल डाउ एडा आ सेडा देखिया पय एबडा तमे गूगल रे भी सर्च करि पारिबो और बहुत छोटटा ब्लैक कलर है गोटे स्मॉल सरो सिलिंडर टाइप रो स्मॉल साइज रो थिबो गूगल रे सर्च करि पारे पीएन जंक्शन ओके डायोड सर्च करि पारे एडा डायोड सिंबल आइला डायोड रो सिंबल
ओके सो ये सिंबल विषय देख कहि दउची एटा पी साइड टा पॉजिटिव आउ एन साइड टा नेगेटिव सो एटा होची सिंबल तार एनोड एला पॉजिटिव माने पी साइड दिस इज पी साइड एंड दिस एन साइड सो पॉजिटिव नेगेटिव एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव ओके ए जो रहला लाइन डा को नेगेटिव मन रखला अदरवाइज भूल भाल हेबार चांस अछि ओके नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर वर्किंग विषय जानिया पे दरकार अछि देखो कोन है सो जेहेतु मु प्रीवियसली ऑलरेडी कहली मोस्ट ऑफ द केस रे कोन अछि ना पी टाइप सेमीकंडक्टर रे पॉजिटिव चार्ज कैरियर अछि ओके पॉजिटिव चार्ज कैरियर अछि एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर तमर कोन अछि नेगेटिव चार्ज कैरियर अछि राइट नेगेटिव चार्ज कैरियर अछि एंड तमु जणा अछि कोन ना सेम टाइप रो पोलरिटी बा सेम टाइप रो चार्ज रे पार्टिकल्स रिपल करिवो एंड similar charge repel dissimilar opposite charge attract so opposite charge उडा कोन हो अट्रैक्ट करिए पॉजिटिव उडा को राइट साइड को आसे उसे ट्राई करिवे एंड नेगेटिव उडा को लेफ्ट साइड को दिया को ट्राई करे से हिसाब रे कोन उडे ए मझी रे उडे तमरो गोटे लेयर फॉर्मेशन हो से लेयर को कहउची डिप्लीशन लेयर माने ए जे लेयर फॉर्मेशन हवा जो कोन होची ना ए जे जंक्शन रे कोन होची ना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाउची ला रेजिस्टेंस अधिक हो जाउची जेतु रेजिस्टेंस अधिक हो जाउची सो आथरे रे कोन हबो ना करंट फ्लो हबनी ओके करंट फ्लो हबनी सो करंट फ्लो करिया पय हम कोन करिया पड़ियो ना किछि सप्लाई प्रोवाइड करिया पड़ियो वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करिया को पड़ियो ओके सो एडा हेला कोन ना पीएन जंक्शन हेला पी टाइप और एन टाइप हेला जो नेक्स्ट सप्लाई हेला बैटरी जो अछि हमर बैटरी रे हमर कोन अछि पॉजिटिव नेगेटिव दैट मींस मु एडा को कोन कनेक्शन करि पारी एबडा कनेक्शन करि पारी आइदर पी टाइप को पॉजिटिव एन टाइप को नेगेटिव एबडा कनेक्शन करि पारिबे और तार अपोजिट भी मु कनेक्शन करि पारिबे राइट सो पी और एन रहला सो अपोजिट जिनकी पी टाइप डा को मु कोन करि पारी नेगेटिव देली और एन टाइप को पॉजिटिव देली सो ओनली यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन दीडा टाइप ऑफ कनेक्शन पॉसिबल है पारियो से माने पॉजिटिव नेगेटिव वाला लगे पारे नल ताको रिवर्स उल्टा करी भी लगे पारियो राइट ओके सो वर्किंग विषय देखो पीएन जंक्शन वर्किंग मींस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एक्सप्लेन करिया कथा ओके बहुत इजी सो दीडा डायग्राम करिवो एंड एक्सप्लेन करिवो वेरी इजी ओके देखो कोन है so p type semiconductor and n type semiconductor right p type n type semiconductor मर्ज कर दलो तमे p type n type semiconductor मर्ज करलो p type और n type semiconductor को मर्ज कर p type n type so ए जाय रे कोन अछि p type रे कोन अब कोन कहितले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोन होल्स so these are your holes मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होची होल्स एंड किछि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स भी अछि एंड एन टाइप रे कोन अछि एन टाइप रे तमरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोन इलेक्ट्रॉन्स जो डार्क उडा अछि इलेक्ट्रॉन उडा को हला इलेक्ट्रॉन उडा कोन नेगेटिव चार्ज कैरियर नाउ फॉरवर्ड बायस मींस कोन पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमें पॉजिटिव बैटरी एंड एन टाइप को हमें नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दबा कनेक्ट करले ए टाइप रे कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस को आउची तो ए जगह रे कोन हबो इन सच टाइप ऑफ कनेक्शंस रे कोन हबो देखो एडी जेहेतु एडा पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर कोन चार्ज कैरियर होची पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव सो पॉजिटिव को पॉजिटिव कोन हबो रिपल हबो पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कोन रिपल हबो सो दैट ए जे पी टाइप जो होल्स डा गछि एडा कोन हबो राइट साइड को शिफ्ट करिवो राइट रिपल करिवो ऑब्वियसली रिपल हबो एपडू जीवो रिपल हबो अट्रैक्ट हेले याडो आसे थांदा राइट रिपल हबो सिमिलरली एडा जो देखो तमरो राइट साइड देखो एडा नेगेटिव रहला एंड इलेक्ट्रॉन डा कोन नेगेटिव सो एडा अट्रैक्ट करे जाय कोन करे रिपल करियो माने दिस साइड फ्लो हबो सो एडा असला ए साइड को ए साइड एडा ए साइड असला सो ए जो डिप्लीशन लेयर हबो ए जो लेयर दिस लेयर विल बी नैरो लेयर माने पतला हे जीवो नैरो पतला हेले कोन हबो आर रेजिस्टेंस टा कमे जीवो रेजिस्टेंस जदी कमे जीवो आ थ्रू रे कोन हबो करंट फ्लो हे पारिबो करंट फ्लो हे पारिबो एंड प्रीवियसली जो सिंबल ला थिला ए बेला डायोड रो बा पीएन जंक्शन रो ए जो एरो मार्क टा दिस denotes the flow of current टा this in this direction रो हबो से डिनोट करछ बुझियला देखो कहि दो when an external field with p region connected to positive terminal and n region connected to negative terminal of the battery is applied across the junction as shown in the figure the junction is said to be forward bias in this arrangement the holes on the p side being positively charged particles are repelled
from the positive terminal and driven towards the junction. Similarly, the electrons on the inside are repelled from the negative terminal, are driven towards the junction. The result is that the depletion layer is reduced, hence the resistance reduced, so hence the flow of current. Okay, बुझीगला. Similarly, reverse bias case रे कौन हबो, reverse connection हबो, reverse connection है right. So p type को दिया negative, n type को दिया positive. So ए जगह रे कौन हबो देखो, ए जगह तमरो एडी. So ए जो p गुडा को कौन हबो attract हबो, p गुडा को negative वाला को attract हबो obviously, and negative गुडा को positive वाला attract हबो. So attract हबा जो कौन हबो, ए जो free electrons movement है उड़ा, आ holes movement है उड़ा होला. द्वारा कौन होला डिप्लीशन लेयर, दिस लेयर इज इंक्रीजेस, लेयर वाइडन, WIDN वाइडन माने वाइड हैला, अधिक हैला, रीजन दा डिप्रेशन लेयर टा बढ़िला, लेयर टा बढ़िला रेजिस्टेंस बढ़िबो, रेजिस्टेंस बढ़िले करंट फ्लो हबनी, बुझिला. सो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो हबो, ड्यूरिंग रिवर्स बायस करंट फ्लो हबो नाही. So working of a PN junction diode, दीडा working रे कौन करियो तमे forward bias reverse bias explain करियो, and very simple देखो PN junction diode is one way device, means only current flow केतला हबो जेतला forward bias हबो, जेतला reverse bias हबो से current flow हबो नाही, means जेतला reverse bias हबो से ओडे insulator वाला behave करिवो, जेतला forward bias हबो से ओडे conductor वाला behave करिवो. This is all about your PN junction working, PN junction and PN junction working. बुझियला. PN junction diode and PN junction diode working. Next VI characteristics of PN junction diode. VI characteristics. VI characteristics. VI characteristics. VI characteristics. A VI characteristics 5 marks exam question aspire. ता सहित तमरा एथरे क्वेश्चंस आसी पारे जे, एथरे तमरा क्वेश्चंस किछि माने 2 मार्क्स क्वेश्चन किछि आसी पारे जिनके नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इन सबडा आसी पारे. ओके देखो, दिस इज योर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, लेफ्ट साइड हैला रिवर्स बायस वोल्टेज, ऊपर रहला फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस करंट, तळो रहला रिवर्स बायस करंट, रिवर्स बायस करंट. सो फॉरवर्ड बायस करंट, फॉरवर्ड बायस जेतला वोल्टेज बढ़ेला, वोल्टेज जेतला बढ़ेला, फॉरवर्ड बायस रे करंट भी कोन होची ना स्लाइडली करंट इंक्रीजेस, स्लाइडली इंक्रीज होला परे रैपिडली इंक्रीज होची, रैपिडली कोन इंक्रीज होची. इन दिस पॉइंट, ए पॉइंट रो कोन हला, ए पॉइंट रो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली. सो ए पॉइंट रो वोल्टेज टा को होची, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज टा को होची नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज. सिमिलरली रिवर्स बायस केस रे कोन हो, रिवर्स बायस केस रे जेतला रिवर्स बायस रा वोल्टेज लेवल बढ़े बढ़े नबो, करंट कोन होचे स्लाइडली रिवर्स बायस रे बढ़ी बढ़ी जाउची. सडनली कोन होची गोटे पॉइंट रे सडनली इंक्रीज, रैपिडली इंक्रीज जाउची. सो ए पॉइंट रे, जो पॉइंट रे सडनली रैपिडली इंक्रीज होला से पॉइंट रे वोल्टेज टा कहि हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज. सो राइट साइड रे जोड़ा तमरा फॉरवर्ड बायस केस रे नी वोल्टेज, and reverse bias case रे तमरा हैला कोन breakdown voltage. and आउट important point एड अछि PIV, peak inverse voltage, peak inverse voltage, peak inverse voltage. so easily तमे explain करि पारिया forward bias reverse bias case रे, simple thing ठीक अछि. forward bias रे आउ reverse bias explain करि पारियो. ठीक अच्छे. सो मु तुमको डेफिनेशन किछि कहि दउछि. नी वोल्टेज, नी वोल्टेज मु ऑलरेडी एबे कहितले डायग्राम करिरे, एबा डायग्राम ठीक अछि. सो नी वोल्टेज कोन अछि, जो पॉइंट रे सडनली एडा अछि फॉरवर्ड बायस, PF फॉरवर्ड बायस. देखो नी वोल्टेज, the minimum forward voltage that can apply to the PN junction at which the forward current through the junction starts to increasing rapidly. so start जो point रो तमरा voltage रो current टा कोन जो point रो voltage टा, voltage रो ए voltage को होचे नी voltage, नी voltage.
सो जो पॉइंट रो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली से पॉइंट रो वोल्टेज को कहछि नी वोल्टेज नेक्स्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स केस रे ब्रेकडाउन वोल्टेज एडा होछि ब्रेकडाउन वोल्टेज this knee voltage breakdown voltage and peak inverse voltage एवडा तमरो 2 मार्क्स रे क्वेश्चंस आसी पारे very important शेयर आसी पारे breakdown voltage it is the minimum reverse bias voltage that can apply to the pn junction at which the pn junction breaks down with sudden rise in reverse current reverse side रे current यदि अधिक बढ़ेबा junction breakdown हे जिवो and तमरो डायोड वर्किंग करिवो नाही नेक्स्ट हैला PIV peak इनवर्स वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज तमे जदि प्रॉपर्ली देखिबो ए सेंटेंस टा माने ए जो नाडा को देखियले कहले भी बुझी पारेडा कोन अछि पीक पीक माने कोन मैक्सिमम पीक माने कोन मैक्सिमम इनवर्स माने कोन रिवर्स इनवर्स इनवर्स कहले कोन उल्टा रिवर्स वोल्टेज simple so it is a maximum reverse voltage that can be applied to the pn junction without damaging the junction without breaking the junction normally कोन होची रिवर्स बायस रे करंट बढ़ले कोन होची तमरा वोल्टेज ता सॉरी वोल्टेज बढ़ले करंट बढ़ुची रिवर्स बायस रे करंट रैपिडली बढ़ी कोन होची जंक्शन ता ब्रेक डाउन हो जाउची जंक्शन को ब्रेक डाउन न करी रे रिवर्स बायस रे मैक्सिमम जति वोल्टेज अप्लाई करि परिबो दैट इज कॉल्ड योर PIV पीक इनवर्स वोल्टेज okay important terms such as ideal diode knee voltage ideal diode केस रे कोन हबो जदी तमे कोन करबो फॉरवर्ड बायस करियो कहले एडा स्विच बडा बिहेव करबो आ रिवर्स बायस करियो ले एडा ओपन सर्किट बडा बिहेव करियो कोडा आइडियल डायोड ता नी वोल्टेज ऑलरेडी कहली नेक्स्ट हैला जंक्शंस ब्रेकडाउन जोडा ब्रेकडाउन वोल्टेज विषय ऑलरेडी कहि साची जीनर ब्रेकडाउन आ एवरेज ब्रेकडाउन विषय हम डिस्कशन करबा आ नेक्स्ट तमरो हैला clipping and clamping so एती तमरो चैप्टर 1 सर जीवा ओके सो तमर जो अछि हला जीनर ब्रेकडाउन आउडे कोन एवलांस ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन और एवलांस ब्रेकडाउन विषय रे टिके डिस्कशन कर देबा जोडा कि तमरो डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन हबो मो पीडीएफ ता तमु शेयर कर देबी ओके सो एवलांस ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन भितर एडी डिफरेंस ता अछि सो डिफरेंस ता तमे वंस रीड कर देबा बहुत इजी जिनसडा म तम बुझे दे देखो जीनर ब्रेकडाउन the जीनर ब्रेकडाउन occur in highly doped diode doping विषय में ऑलरेडी कहि साची डोपिंग कोन द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity एडिंग करियार impurity माने कोन ट्राइवैलेंट बा पेंटावैलेंट n type p type पढाले कोथली ओके द width of the depletion region is very thin depletion layer विषय आगुर कहि साची देखो दैट्स व्हाई ये देखो डायरेक्टली डिप्लीशन रीजन माने कोन जानि पाछन नै ना सेतबे सेडा सब स्टार्टिंग रे बुझेली so depletion the width of the depletion region becomes very thin patra hai jauchi the reverse bias applies across the pn junction develops the electric field intensity across the depletion layer region एटा टी तमो रीड करा पड़ियो the strength of the electric field intensity becomes very high thereby the carrier starts jumping from one region to another these energetic charge carriers collide with the atoms of the p type and n type material and produce the electron holes pair the reverse current starts flowing in the junction because of which depletion region becomes entirely vanished this process is known as Zener breakdown जो डिप्लीशन लेयर अछि कंप्लीटली कोन वैनिश हो जाउ सेडा होछि तमरा Zener ओके Zener ब्रेकडाउन कहउछि the Zener breakdown the junction is not completely damage habo nahi the depletion region regains its original position after the removal of the reverse voltage so dide ra case re tamara kono reverse voltage so but kon achi na Zener voltage ta Zener breakdown ta kono na highly doping diode ta highly heavily डोपिंग कराई माने प्रॉपर्ली डोपिंग कराई जदी प्रॉपर्ली डोपिंग कराई रिवर्स बायस रे वोल्टेज अप्लाई करले भी किछि एते प्रॉब्लम होबनी से विषयडा देछि एवलांस ब्रेकडाउन दा उल्टा लाइटली डोपिंग कराई ताउची लाइटली डोपिंग कराउची सो जेतो रिवर्स बायस हबो जो लेयर ता कोन हबो बहुत मोटा हे जो हला ठीक लेयर हबो
सो रिवर्स बायस रे जो वोल्टेज टाको आमे कहबा एवलांस ब्रेकडाउन ओके एवलांस कोन ब्रेकडाउन once पढ़ देबो हला the process is contained at the collision increases in the electron hole pair as the electron hole induces in the high electric field they are quickly separated and collide with other atoms of the crystals the process is continuous more and more electrons hole pair created and reverse current starts flowing in the p-n junction the process is known as the valence breakdown after the breakdown the junction cannot regain its original position completely कोन अब डायोड टा वर्किंग करिवो नाही बर्न एज पुडी जो गला आउ डायोड वर्क करिवो नाही एवलांस ब्रेकडाउन रा डायोड वर्क करियनी बट जीनर ब्रेकडाउन रे डायोड टा जदी हमें जदी रिवर्स नॉर्मली कोन करा जाए रिवर्स कनेक्शन करा हबो नाही रिवर्स कनेक्शन करिवा नाही बुझिला रिवर्स कनेक्शन कले कोन अब तमरा सेडा प्रॉब्लम हबो नॉर्मल बहुत सारा जिन गुड़ा देख तुम जदि आम कौन करिया कैप टाक ओपन करिया जगह आम जदि मुड़ी दे कहले टाइट रे कौन है फाटी जानी सिमिलर टाइप जिनसा रिवर्स रे हबनी बट रिवर्स रे जदि करिया कनेक्शन करिया हाईली जदि डोपिंग थिबो तमरा सेला जिनर ब्रेकडाउन कहबा आ जदि लाइटली डोपिंग थिबो ताको एवलांस ब्रेकडाउन करबा कहबा जंक्शन पूरा ब्रेकडाउन हो जिवो डायोड वर्क करबो नाही सो डिफरेंस टा छेडी पढ़े दबो हला डिप्लेशन लाया जंक्शन कौन होची इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होची डोपिंग कौन होची रिवर्स पोटेंशियल कौन होची ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन होची सब देछि आफ्टर ब्रेकडाउन हला आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ओके तापर हला क्लिपिंग आउ क्लैंपिंग क्लिपिंग आउ क्लैंपिंग क्लिपर क्लैंपर देखो क्लिपिंग सर्किट कौन सिंपल थिंग डायोड जेतड़ फॉरवर्ड बायस हबो डायोड करंट कंडक्शन हबो रिवर्स बायस रे करंट कंडक्शन हबो नाही क्लिप क्लिप माने कोन करछ क्लिप कर देबा रिमूव करिया किछि पार्ट को रिमूव कर दागु क्लिपिंग कछ क्लिप ला सपोज एडाला तमर वेव फॉर्म ओके एडाला तमर कोन ना एडाला वेव फॉर्म मु आगु कोन करे ना किछि पार्ट क्लिप कर दे माने ए पार्ट को बाहर कर देबे आ ए पार्ट को बाहर कर दे रिमूव कर दे बाय एनी मींस तो नेक्स्ट जो वेव फॉर्म डा आसीबो हमर कोडा आसीबो वेव फॉर्म डा हमर आसीबो एइडा किछि आसीबो देखो एटा सीधा आसीबो एडी एटा बरिन दस ए जो वेव फॉर्म डा हम कहया कोन क्लिप हला क्लिप हेला माने वोल्टेज किछि रिड्यूस हेला को क्लिप कहबो the circuit which the waveform is shaped by removing or clipping remove or clip bar कर देबा clipping a portion of the applied wave is known as clipping circuit ला ओके सो क्लिपिंग हम कोन टाइप करि पारिया पॉजिटिव क्लिपर हला नेगेटिव क्लिपर कंबाइंड क्लिपर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपर है पॉजिटिव क्लिपर आओ नेगेटिव क्लिपर ओके सो एटा पॉजिटिव क्लिपर आइदर आमे कोन करि पार आइदर मुझे कहले प्रीवियसली आइदर किछि पोर्शन को रिमूव करि पारिया नले कंप्लीटली पॉजिटिव पार्ट को भी रिमूव करि पारिया नले नेगेटिव पार्ट को भी रिमूव करि पारिबा सो पॉजिटिव क्लिपर रे दिस इज पॉजिटिव क्लिपर रे कोन है ना पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाय माने पॉजिटिव पार्ट हमर आसीनी आउटपुट रे ओनली नेगेटिव पार्ट आउटपुट रे आसी किने आसी देखो बहुत इजी जिंस तो एडी हम सप्लाई दे देले हला इनपुट रे एसी सप्लाई दे देले एडा ओके एसी सप्लाई रेडी कोन हला थ्रू रेजिस्टर थ्रू दियाला डायोड डाउड एबडा हमर कनेक्शन कराय छ हला डायोड एडी कनेक्शन कराय छ सो एंड तमरा एडी लोड रेजिस्टेंस लागि छ आउटपुट रे लोड रेजिस्टेंस लागि जोडा कि आउटपुट वोल्टेज ता मेजर करिया पई ओके आउटपुट वोल्टेज ता मेजर करिया पई सो एडी कोन हबो एडा होची पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रे कोन हला ना ए पॉइंट ता पॉजिटिव एडा नेगेटिव राइट पॉइंट एडा पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव ऊपर जदी पॉजिटिव तो नेगेटिव ओके
सो एटा जेतु पॉजिटिव हला डायोड कोन हमरे फॉरवर्ड बायस हबो कहि ऑलरेडी डायोड टाइड होची डायोड ओके डायोड जदी एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव ऑलवेज मेंशन करा दरकार नै ठीक अछि पॉजिटिव नेगेटिव खाली जानिया पे हमें मेंशन करिया के दरकार नै सो पॉजिटिव पार्ट मु जदी एडी पॉजिटिव बैटरी एटा जदी नेगेटिव कनेक्ट करबी कोन हबो एडी डायोड कंडक्ट्स करिवो करंट फ्लो हबो फॉरवर्ड बायस कहिची रिवर्स बायस करंट कंडक्शन हबनी रिवर्स करंट कला हबनी सब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रे कोन हला डायोड कंडक्ट करे जगु कोन हला ना करंट तमरो डायोड थ्रू रे फ्लो हेला आउ तमरो का रेजिस्टेंस थ्रू रे फ्लो हबो नाही काइना जेतला फॉरवर्ड बायस होची डायोड थ्रू रे रेजिस्टेंस कोन वेरी लेस सो ऑलवेज करंट लो रेजिस्टेंस पाथ रे ही फॉलो करिवो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोस थ्रू दिस डायोड हेंस आउटपुट आसला नाही बुझियला आउटपुट ता कोन हला क्लिप हेला रिमूव हेला राइट बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कोन हला डायोड वर्क करियनी काइना डायोड रिवर्स बायस हे जिवो डायोड रिवर्स बायस हे नेगेटिव एटा जे नेगेटिव हो दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव जदी आसीबो करंट फ्लो हबो नाही रिवर्स बायस रे करंट फ्लो हबोनी रिवर्स बायस जदी करंट फ्लो हबोनी करंट जदी एपड आसीयनी नियति आउटपुट आसीबो दैट्स व्हाई आउटपुट रे तमर आसी बुझियला सेडा ही तमे एक्सप्लेन करिया कथा सिंपल लैंग्वेज रे एक्सप्लेन करिया कथा नेगेटिव क्लिपर सिंपल थिंग डायोड को रिवर्स रे कनेक्ट कराय जे उल्टा कनेक्ट कराय जे ऊपर कनेक्ट कराय देखो डायोड को सो सेम थिंग एक्सप्लेन करि पारे इजीली ओनली कोन अछि नेगेटिव पार्ट टा कैंसिल हेला ओके नेगेटिव पार्ट टा कैंसिल हेला ओनली पॉजिटिव पार्ट आसला काइना पॉजिटिव पार्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग पॉजिटिव ओके ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एटा पॉजिटिव राइट एंड दिस इज योर नेगेटिव एटा पॉजिटिव हवा जगो हरा एटा नेगेटिव हवा जगो डायोड कोन रिवर्स बायस हबो डायोड रिवर्स बायस ले डायोड करंट फ्लो हबनी करंट फ्लो का थ्रू रहबो आउटपुट रहबो सो आउटपुट रे सप्लाई आसीला ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कोन हबो दिस विल बी नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव जदी ए जो एरो मार्क टाइप अछि एटा जो नेगेटिव हला हला आउ एटा पॉजिटिव हला फॉरवर्ड बायस हबो ऑलवेज मन रखो एटा डायोड टा केते सर कहि रे हला ए जो साइड टा एरो साइड टा एटा जो नेगेटिव आ ए साइड टा पॉजिटिव हला तम डायोड कंडक्शन करियो फॉरवर्ड बायस हबो कोन हबो फॉरवर्ड बायस एडे हला तमर कोन नेगेटिव क्लिपर बायस पॉजिटिव माने किछि परसेंट कटि गेला किछि परसेंट किन कटला एक्स्ट्रा गोटे वोल्टेज एडी लागि छि सब किछि परसेंट कटि गेला एटलीस्ट तमे डायग्राम करेरी आराम से एक्सप्लेन करि पारिबो डायग्राम एटलीस्ट तमे मन रखिया पड़िबो बायस रे नेगेटिव क्लिपर माने नेगेटिव रे किछि परसेंट कटु छि हला तापर कॉम्बिनेशन क्लिपर माने कोन अधिक किछि परसेंट कटिबो टिके पढ दो करथरा दीडे जागो कंबाइन हे जाय छि हला क्लिपर हेला तापर क्लैंपर देखो क्लैंपर रे कोन कराय छि क्लैंपर रे आर वोल्टेज वेवफॉर्म को इंक्रीज कराय छि ओके इंक्रीज कराय छि बढ़ाय जाय छि वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देला एडा क्लैंपर सब पॉजिटिव क्लैंपर आओ नेगेटिव क्लैंपर पॉजिटिव परसेंट जदि हमें बढ़ेया किछि पुश करि पारिया इंक्रीज करि पारिया सेडा को पॉजिटिव क्लैंपर कहबा नेगेटिव क्लैंपर कहले नेगेटिव परसेंट जदि हमें इंक्रीज करबा ताको हमें नेगेटिव क्लैंपर कहबा हला तो वंस पॉजिटिव क्लैंपर आ नेगेटिव क्लैंपर डायोड थ्रू रे ही करबा हला पॉजिटिव क्लैंपर आ नेगेटिव क्लैंपर ए देखो जे ए डायग्राम देखो पॉजिटिव नेगेटिव अछि ओनली पॉजिटिव परसेंट अधिक हो जाय डायग्राम करबा ताको टिके एक्सप्लेन करबा हला नेगेटिव क्लैंपर okay this is all about your chapter number 1 in chapter number 2 okay chapter number 2 रे कोन अछि thermistors sensors zener diode tunnel diode pin diode okay thermistor zener diode so exam रे आसी पारे तमरो zener diode आ tunnel diode thermistor भी आसी पारे 5 मार्क्स रे क्वेश्चन आसी पारे हला zener diode बा tunnel diode बहुत इजी जस्ट डायग्राम करबो एक्सप्लेन करबो एतिया each case रे diagram आओ explanation okay special type of semiconductor device these are your special type of semiconductor device हला फर्स्ट हैला थर्मल रेजिस्टर नाडा देखो थर्मल प्लस रेजिस्टर थर्मिस्टर टेम्परेचर देले रेजिस्टेंस बढ़िबो बा कमिबो ठीक अछि these are your thermistor such type of thermistor एडा सब तमरो थर्मिस्टर उडा
Semiconductor, most of the semiconductor are negative coefficient of temperature, means temperature बढ़ेले resistance कमिबो. Negative temperature coefficient. Temperature बढ़ेले resistance कमिबो होची negative temperature coefficient. तो एगुडा तमरा होची कोन ना thermistor. Just diagram करिवो आ तार किछि फीचर्स गुडा को पढे देबा. मेंटेन होची voltage, ओके करंट तमरा मेंटेन होची. सेल्फ हीटिंग thermistor को होची. Applications को जगह यूज कराउची. It is used for measurement of and control of temperature and temperature compensation. It is used for measurement of power at a high frequency. It is also used for thermal conductivity. Thermistor is used for measurement of level, flow and pressure of liquids. What is the matter? Then sensor. Sensor is a device that detects events or changes in quantities and provides a corresponding output, generally as an electrical optical signal. For example, a thermocouple converts temperature to an output voltage. Similarly, out a sensor mu kahi pari tamara koda sensor kodai pare. Sensor or you can say transducer, means electrical माने physical signal को से electrical signal रे convert करिवो. तम जो माइक्रोफोन डा भी अछि सेडा भी गोटे प्रकार सेंसर. माइक्रोफोन डा जे गोटे प्रकार सेंसर बा तमरा कोन ना ट्रांसड्यूसर. कोन होछि से तमरा माइक्रोफोन जे अछि ऑडियो सुनुछि ठीक अछि तो ताको कन्वर्ट करछि का इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे. तम रिकॉर्डिंग गुडा को देखितियो मोबाइल रे रेकॉर्डर अछि, ऑडियो रेकॉर्डर अछि. देखियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जदी करियो देखियो सिग्नल गुडा एवडा आछि. देखियो तमे साइलेंस रहि जिवो सिग्नल पूरा स्टेडी हे जिवो. जदी किछि वॉइस ऑडियो दबो ले सिग्नल एवडा आछि, वेवफॉर्म एवडा आछि. देखितियो रिकॉर्डिंग गुडा तमे देखितियो. ओके सो बैकग्राउंड रे नॉइज फेज हे पारे ताको टिके इग्नोर करिवो. सेंसर विषय पढ़ देबो टिके. नेक्स्ट हैला जीनो डायोड. दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. जीनो डायोड देखो ओके देखो जीनो डायोड वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो चारटा पांचटा पॉइंट्स कहबी प्रॉपर लिखिबो तमरा एग्जाम रे 5 मार्क्स आसीबो नियात एग्जाम. A properly doped crystal diode which has sharp breakdown voltage is known as Zinno diode. This is Zinno diode. Normal ordinary diode red symbol हैला. Ordinary diode symbol हैला. एडा तमरा Z shape रे जोड़ा अछि. This is your Zinno diode. हैला Zinno diode. Zinno diode is like ordinary diode except that it is properly doped or sharp breakdown voltage. Sharp breakdown voltage. Next होची Zinno diode is always reverse bias रे connect हबो. Always कोन बना reverse bias रे connect हबो. Zinno diode has sharp breakdown voltage called Zinner voltage. Zinner voltage. When so next इले कोन जदी Zinno diode कोन हला Zinno diode को मु कोन गेली ना always reverse bias रे connect होची. Forward bias रे connect करले कोन हबो ordinary diode वाला behave करियो. So when forward bias, its characteristics are just like those of ordinary diode. And applications are very very important. को जगह तमर Zinno diode यूज होची. voltage regulator, fixed reference voltage, transistor biasing circuit is सब जन तमर Zinno diode यूज होची. हला हेला तमर Zinno diode हेला tunnel diode और pin diode. हला tunnel diode और pin diode. टनल डायोड एडा होची टनल डायोड जा देखो टनल डायोड एडा होची टनल डायोड. मन रखो सिंबल दा ठीक अछि. एडा होची टनल डायोड. टनल डायोड एडा होची तार कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज इंपोर्टेंट. जस्ट कि मन रखियो वंस ड्रा कर हे जियो खातर गोटर ड्रा कर बहुत सहज जिनसडा. देखो under normal forward bias operation as voltage begins to increase, electrons at first tunnel through the very narrow p-n junction barrier. Because field electron states in the conduction band on the n side becomes allied with the empty valence band hole states on the p side of the pn junction. एटी बारंबार पढ़िबो ठीक अछि. वोल्टेज इंक्रीज हले हबो. एटा जस्ट तमे जो डायग्राम टा करिवो आ टनल डायोड सिंबल करिवो आ ता भितरे तमे नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड विषय भी लिखि देले मार्क प्राय मिल जिवो. ठीक देखि देबो नेगेटिव रेजिस्टेंस एटा गुआउची. ओके और बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड डायोड. In the tunnel diode, the reverse breakdown voltage becomes zero and the diode conducts in the reverse direction. However, when forward bias, an odd effect occurs which gives rise to the region where
an increase in forward voltage is accomplished by decrease in forward current. Here once read karo pin diode hala, pin diode. The pin diode can be shown diagrammatically diagrammatically as being PN junction, but with an intrinsic layer between PN layer. The PN layer with intrinsic layer, I layer intrinsic layer of the PN diode is layer without doping, माने जो भीतर जो layer टा नहीं रे doping कराएनी. Normal P रे कौन doping कराएजी, N रे भी doping कराएजी, N type P type एटा किच्छी नाई doping कराएनी, I डाउ जी doping कराएनी. डायग्राम करे आराम से 2-4 लाइन 5-10 लाइन देखियो होला पढ़ दे गोटे थरा. तापरे हेला चैप्टर नंबर 2 सरला. चैप्टर नंबर बहुत छोटडा गोटे 5 मार्क क्वेश्चन आइला आइबो. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होची रेक्टिफायर सर्किट एंड फिल्टर्स. रेक्टिफायर सर्किट एंड फिल्टर्स रो देखो फिल्टर्स और रेक्टिफायर कोन देखो ए जो गुडा अछि रिपल फैक्टर, रेगुलेशन, ओके, आउटपुट, पीक इनवर्स वोल्टेज, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ए सब जाके 2 मार्क के वाला क्वेश्चन आसीबो. ठीक है रीड कर दबो. सब लॉन्ग क्वेश्चन कोड आसे सेटा हमें डिस्कशन करिया. फर्स्ट दिन सैला क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर मोस्टली 2 टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल टाइप रेक्टिफायर. सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर एटा तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रे भी पढ़िथियो, टिके रिकॉल करो हला. फुल वेव रेक्टिफायर अगेन 2 टाइप्स, सेंटर टाइप और ब्रिज टाइप. एग्जाम रे आइदर फुल टाइप ब्रिज रेक्टिफायर आसी पारे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन, अदरवाइज नले गुड क्वेश्चन आसी पारे लॉन्ग क्वेश्चन रे क्लासिफायर रेक्टिफायर क्लासिफिकेशन विषय लिखो बुझिला. एटा हेला गुड तमर रेक्टिफायर क्लासिफिकेशन हेला. नेक्स्ट हेला फिल्टर. 2 लॉन्ग क्वेश्चन एडी अछि, 2टा लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन एडी अछि आ बहुत सारा बिट क्वेश्चन उडा को भी एडी अछि. व्हाट इज फिल्टर, व्हाट इज रिपल फैक्टर, व्हाट इज रिपल, ओके ए सब तमरा आसी पारे 2 मार्क्स रे एच. 2टा लॉन्ग क्वेश्चन एडी 2टा अछि, सो से विषय में डिस्कशन कर दबा. रेक्टिफायर कोन rectify the process of conversion from AC to DC, AC ru DC alternating current ru direct current को convert करिया को rectification को आउची. प्रोसेस को rectification को आउची आ जो डिवाइस टा को rectifier कहबा. The process of conversion from AC to DC is known as rectification and the device which is used in the rectification is called rectifier. So generally normally diode is used in rectifier. कौन भाई ना डायोड फॉरवर्ड बायस रे करंट फ्लो होची, रिवर्स रे करंट फ्लो होनी बुझिला. सिंपल कांसेप्ट देखो एडा हैला कोन एसी सप्लाई. ओके जदी हमें डायोड यूज करिवा, डायोड जदी यूज करिवा कोन हबो ना डायोड पॉजिटिव केस रेडा पॉजिटिव केस रेडा पॉजिटिव हैला. पॉजिटिव केस रेडा कोन हबो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कौन हम कंडक्शन हम तो आउटपुट रे आउटपुट करंट आसीबो, आउटपुट वेवफॉर्म आसीबो. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ एटा नेगेटिव हेले कोन हम नेगेटिव हेले रिवर्स बायस हबो. एंड मु बहुत रिपीट करनी ऑलरेडी रिवर्स बायस करंट फ्लो हबनी, रिवर्स बायस रे करंट फ्लो हबनी, सो आउटपुट आसीबो नाही बुझियला. सो ओनली पॉजिटिव पार्ट आसला, ओनली पॉजिटिव पार्ट आसले एबडा आसला. सो एबडा वेवफॉर्म आसला पर हम जाको फिल्टर कर दबा, फिल्टर करले तमर सला डीसी सप्लाई टाइप रे आसीबो, डीसी हे जियो बुझियला. सो एसी टू डीसी कन्वर्सन केते टाइप रेक्टिफायर दिला हाफ वेव फुल वेव. ओनली जदी गुडे गोटे वेव एटा गुडे एसी अल्टरनेटिंग वेव, दिस इज वन हाफ साइकिल, दिस अनदर हाफ साइकिल. ओनली जदी हाफ साइकिल रे वर्किंग करे सेटा हाफ वेव रेक्टिफायर. कंप्लीट फुल वेव जदी वर्किंग करे सेटा फुल वेव रेक्टिफायर. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर. देखो हाफ वेव रेक्टिफायर रे ओनली गुडे सिंगल डायोड यूज होचे, एडी सिंगल डायोड यूज होची. एटा तमर ट्रांसफार्मर अछि ठीक अछि. जेहेतु नॉर्मली एसी टू डीसी कहले कोन डीसी हम केते दरकार 12 वोल्टेज 9 वोल्टेज 5 वोल्टेज 2 वोल्टेज इन दरकार. दैट्स व्हाई हम कोन को जोडे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ओडे यूज होचे. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोन हबो वोल्टेज लेवल कमिबो, कमिले से वोल्टेज तो हम कोन करिया डायोड थ्रू रे यूज करिया. during positive half cycle, this point A is positive with respect to point B, means point B negative. जदि एटा positive एटा तमर डायोड टा राइट एटा डायोड. सो डायोड रो
this is positive side, this is negative side. So p को positive है p p n junction एटा p n junction दा p n junction डाटा p को p n को n जदी कनेक्ट हबो एटा कोन फॉरवर्ड बायस हबो फॉरवर्ड बायस ले डायोड कंडक्ट करिवो डायोड रे करंट फ्लो हबो एंड से आउटपुट आसला क्लियर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कोन हबो point A is negative with respect to point B hence diode is reverse bias so diode does not conduct that's why एटा suppress हेला आउटपुट आसला नाही आउटपुट वेवफॉर्म आसला नाही बुझिला सिमिलर अगेन पॉजिटिव आसला नेगेटिव आसीबो नाही suppress हेला suppress नेगेटिव आउटपुट आसला नाही बुझिला once read कर दो बुझियो बहुत इजी मो तुम पठे दी मु एटा तुम पीडीएफ टा रेक्टिफायर ओके सो सर्किट ऑपरेशन केन कोन है सेटा बुझे माने बुझाई तेडी पॉजिटिव हाफ साइकिल रे वर्क करबा ओनली बहुत इजी है फुल वेव रेक्टिफायर अगेन टू टाइप रो गोटे सेंटर टैप रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टैप कोन ना सेंटर टैप होचे जो ट्रांसफार्मर सेंटर पॉइंट रे गोटे टैपिंग कराई छी तार साइड होचे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर सेंटर पॉइंट देखो सेंटर पॉइंट रे देखो सेंटर ए पॉइंट देखो सेंटर पॉइंट देख पाछो ए जो सेंटर पॉइंट रे ट्रांसफार्मर टैपिंग कराई छी अच्छा एटा होचे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कोन देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव हेंस डायोड D1 will conduct and diode D2 will not conduct hence output is due to diode D1 only during negative half cycle diode D2 conduct D1 will reverse bias hence the output is due to D2 एबडा बहुत इजी once read करा बुझिजो सब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस रे खेल एडा हैला ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ओके ब्रिज टाइप रेक्टिफायर तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर इन सेपरेटली दिला डायग्राम करि पारियो एडा तमरा फॉरवर्ड बायस केस रे रिवर्स बायस रे केस रे कराई छी माने गोटे पॉजिटिव हाफ साइकिल रे गोटे नेगेटिव हाफ साइकिल रे डायग्राम कराई छी बट तमे सिंगल डायग्राम भी करि पारियो एवडा ओके सिंगल गोटे डायग्राम भी करि पारियो एवडा एडी जो अछि मझी रे तमे यूज करि पारिबो कोन तमे ए जो रजिस्टर टा मिडिल रे कनेक्ट करि पारिबो वेरी इजी डायोड गोटे एवडा किछि फैशन रे कनेक्ट कराई छी एवडा ठीक अछि पैरेलल टाइप रो अछि देखो डायोड टा गोटे ब्रिज फॉर्मेशन हैला दैट्स आर नाउ जी ब्रिज रेक्टिफायर during positive half cycle point P is positive with respect to point Q negative so एटा पॉजिटिव जदी हला एटा जदी पॉजिटिव हला मोडे जूम कर दिया ओके सो देखि पारछो ओके ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव दिस नेगेटिव एटा जे पॉजिटिव हला डायोड D1 कंडक्ट करिवो ओके सो देन एडी असला आ थ्रू रे डायोड कोन हो डायोड देन एटा कंडक्ट करिवो नाही देखो पॉइंट ए रे ग्राउंडिंग अछि आ एपटे ग्राउंडिंग अछि सो इन ग्राउंडिंग न करी भी डायग्राम रे हम कोन करि पारिबा डायग्राम रे हम स्मॉल चेंजेस भी करि पारिया माने सेम थिंग किछि भूल नाही ए जो मझी रे हमें रेजिस्टर टा लगे पारिबा को रेजिस्टर टा लोड रेजिस्टेंस टा सो नाउ कोन हबो पॉइंट जेतु डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हला देन कोन हबो डायोड D2 रिवर्स बायस हबो कोन भाई ना एटा पॉजिटिव सप्लाई आसले एटा पॉजिटिव वर्क करेगी नहीं सो डायोड कोन करंट का थ्रू फ्लो हबो रेजिस्टर थ्रू फ्लो हबो नेक्स्ट ए जगह कोन हबो डायोड D3 फॉरवर्ड बायस हला हेंस आसला बुझियला एटा सेपरेटली डायग्राम करा है इन दी डायग्राम डा करा है सेथरे हला फॉरवर्ड बायस केस रे सिमिलर रिवर्स बायस केस रे उल्टा हबो रिवर्स बायस केस रे ए थ्रू रे गला ठीक अछि एडी गला एडी रेजिस्टर आसला इन द सीरीज एटा अछि रिवर्स बायस रे करंट फ्लो कंडक्शन हबो ना सो डायोड फर्स्ट केस रे कोन हबो डायोड D1 आउट D3 फॉरवर्ड बायस हबो हला फॉरवर्ड बायस हला आउटपुट आसला फर्स्ट केस रे सेकंड केस रे कोन अछि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कोन हला डायोड D2 D4 कंडक्ट हला अगेन D1 D4 D1 D3 ए देखो बुझियला एटा सेपरेटली डायग्राम कराई छै एटा फर्स्ट D1 D3 कंडक्ट करे सेकंड रे D2 D4 कंडक्ट करे सो तमर यदि एग्जाम आसला इन सेपरेटली दिला डायग्राम करि पारियो किछ ऑप्शन है बहुत इजी जिंस हालीडा
ओके नेक्स्ट कौन अच्छी डायोड होगा तीन डायोड विषय मुझे एक्सप्लेन करदेली ओके सो आउ किसी कहीदे रिपल फैक्टर ये सब देखिए आउ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पिक इनवर्स वोल्टेज ऑलरेडी कही सारी डायोड रे है डेफिनेशन टी देखीदेव आउटपुट वोल्टेज डेरिवेशन जहाँ देखिए बुझे करी बहुत टाइम लगे बुझाई डेरिवेशन जा रिपल फैक्टर बहुत इजी रिपल फैक्टर कौन रे देख मुझे जस्ट कहली कौन आउटपुट रे ये आसला आउटपुट रे तुम जो एडे छाड़ हाँ एडे नहीं ओके सो जो तुम देख लो ओके ये तुम देख पाच आउटपुट रे कौन है एडे कौन एसी की एसी नहीं एडे कौन एसी सप्लाई की नहीं नेगेटिव पार्ट नहीं ना तो एडे कौन एसी सप्लाई हम कि एसी सप्लाई नहीं बट एडा डीसी बट एडा प्योर डीसी नहीं प्योर डीसी रो वेव फॉर्म एडा स्ट्रेट लाइन हम ना एडा प्योर डीसी नहीं आपको कौन कहछि ना पल्सेटिंग डीसी पल्सेटिंग डीसी मींस एथरे किछि पल्स अछि मींस आउटपुट रे भी किछि एसी क्वांटिटी प्रेजेंट अछि and those AC quantity are not required that is unwanted not required so the AC quantity present in the rectifier output जो AC quantity जो present अछि the unwanted AC quantity present in the rectifier output is called ripple and ripple factor कौन ripple factor होची input by output although एडा input by output नहीं किंतु input by output कल तमे आराम से बुझी पारिया बहुत इजी जिनसड़ा input टा कौन डाको जो rectifier input रे कौन input टा कौन एडा AC so AC रे तमे RMS value divide by output टा कौन डा DC value डा so DC value so it is a ratio between ripple factor is a ratio between RMS value of AC by DC value ripple आउ ripple factor विषय बुझीला ripple factor विषय जानि पारलो the output of a rectifier consists of a DC component and AC component टा ripple को आउची which is undesirable or unwanted so the unwanted AC signal present in the rectifier output is called ripple and ripple कौन input by output input टा कौन AC RMS value AC component by value of DC component IAC by IDC होची ripple factor and ripple factor for half wave is 0.21 and for full wave it is 0.48 for full wave it is 0.48 and for half wave it is 1.21 just the value मन रखितो डायरेक्ट एग्जाम रे आसी पारे 1.21 for the case of half wave and for the case of full wave it is 0.48 obviously full wave रे कोन हो रिपल टे कम रहयो रिपल माने अनवांटेड हला नेक्स्ट है TUF transformer utilization factor it may be defined as the ratio of DC power delivered to the load and the effective VA rating of the transformer volt ampere rating थिबो ऑलरेडी मु तो मशीन रे पढो छी kVA तो किलो बा नॉर्मली VA तार हायर रेटिंग ना किलो वोल्ट एम्पियर तो ट्रांसफार्मर रेटिंग हला इट इज द रेशियो ऑफ DC पावर आउटपुट बाय ट्रांसफार्मर रेटिंग एडा कुछ TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ओके एडा डिफरेंट रेक्टिफायर पे ट्रांसफार्मर ये कराय छी एडा गोटे ट्रांसफार्मर सॉरी रेक्टिफायर कंपैरिजन छै हाफ वेव फुल वेव रो तापर रहला फिल्टर सर्किट ओके जस्ट मु कहतली फिल्टर सर्किट कहला जो आउटपुट जो अनवांटेड एसी क्वांटिटी रहउची और यू कैन से एडा तमर कोन होची ना रिपल जो कहउची से जगह हम फिल्टर आउट करागो फिल्टर सर्किट यूज करा जिन के हमें पानी फिल्टर कोन करछे गंदा जिनस फिल्टर कर दोचे भल पानी को हमें यूज करछे सिमिलरली जोड़ा दरकार नै तो सेडा हम फिल्टर आउट कर दबा आउटपुट हम डीसी यूज करिया
सिंपल थिंग एडा हेला तमर आउटपुट रेक्टिफायर आउटपुट सो फिल्टर सर्किट आम यूज कले कौन हम फिल्टर सर्किट कौन कर ना प्योर डीसी रे कन्वर्ट कर प्योर डीसी रे कन्वर्ट कर what is rectifier or filter, sorry, what is filter? A filter is a device which removes the AC component present in the rectifier output and it allows the DC component to flow through the load. Okay, then L ଆଉ C, L capacitor ଆଉ inductor एडी यूज हेबो सो मु तुमको जेतले पढैतली सीएनटी रे पढेला आरएलसी सर्किट रे पढेला बहुत तरह में रिपीट करछे एक्सएल कोन एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल and XC equal to 1 by 2 pi F into C. So CNT पढ़ाले बहुत तरह मुझे रिपीट करथली XL है कोन 2 pi FL XC होची 1 by 2 pi FC. XL is the inductive reactance, F is the frequency, XC होची a capacitive reactance 1 by 2 pi FC. Now in case of DC frequency is 0, right? In case of DC frequency 0 जदि इंडक्टर केस रे इंडक्टर जदि हमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करिया फ्रीक्वेंसी 0 हैला जदि फ्रीक्वेंसी 0 एक्सएल रो वैल्यू केता आसीबो 0 आसीबो आ आर यूनिट कोन ओम 0 ओम रे मीनिंग कोन करंट ता थ्रू रे इजीली फ्लो हबो सो जतो डीसी सप्लाई दबो इंडक्टर थ्रू रे डीसी सप्लाई कोन हबो डीसी इजीली फ्लो हेई पारिबो सो इंडक्टर अलाउस डीसी while capacitor blocks DC. Okay, बुझिएला ना सिंपल. Okay, so XC ला 1 by 2 pi FC. So ए जगह जदि हमें यूज करिया कोन 1 by F जगह जदि DC सप्लाई हमें जदि देबा DC रा फ्रीक्वेंसी 0 so 1 by 0 रा मीनिंग कोन 1 by 0 होची इनफाइनाइट ओम माने कोन अधिका ओम रेजिस्टेंस कहले अलाउ करियो नै DC को ब्लॉक करियो के कैपेसिटर while inductor allows DC and capacitor blocks DC. Okay, so hence capacitor doesn't allow DC through it. Inductor कौन करे DC को इजीली प्लस पास करोच ए कांसेप्ट ही तमरा यूज है जी कोन फिल्टर रे केते टाइप रे फिल्टर अछि देखो टाइप्स ऑफ फिल्टर इंडक्टिव फिल्टर कैपेसिटिव फिल्टर और शंट कैपेसिटर चोक इनपुट फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर और पाई फिल्टर देखिए हमारे कौन अच्छी फिल्टर्स रे कौन इंपोर्टेंट अच्छी शंट कैपेसिटर अच्छी चोक इनपुट अच्छी पाई फिल्टर शंट कैपेसिटर चोक इनपुट पाई फिल्टर तीन अच्छी कोड़ा तमरा शंट कैपेसिटर अच्छी चोक इनपुट अच्छी और कैपेसिटर अच्छी तीन फिल्टर अच्छी सिलेबस तमरा ए तीन फिल्टर अच्छी एडा नाही नोट दिया जायछि बट ए तीन तमरा फिल्टर अच्छा हमें डिस्कस करिया ए तीन विषय डिस्कस करिया ना पांचटा ना है ओके कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और चोक शंट कैपेसिटर शंट माने कोन पैरेलल जानछो शंट कैपेसिटर लोड सहित कैपेसिटर और शंट रे कनेक्ट अछि देखो ओके सो जेतला हमें सप्लाई प्रोवाइड करिवा सप्लाई जेतला कोन हबो ना सप्लाई जेतला हमर प्रोवाइड करिया ये कोन हबो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी राइट सो आ थ्रू रे डीसी दा ये ब्लॉक करियो मींस कोन ये एसी को अलाउ करियो सो जो एसी कंपोनेंट अछि से एसी कंपोनेंट जा कोन कैपेसिटर थ्रू रे आस जीवो एंड ये जेतु डीसी को अलाउ करूनी डीसी को जदी जेतु डीसी को अलाउ कर डीसी रा ऑब्वियसली आउटपुट आसीबो तो सही हिसाब रे आछि तमे टिके पढि दबो एटा टिके हला वंस रीड कर दबो कैपेसिटर चार्जिंग हैला डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर कोन हला कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्ज सो गोटे वेब फोन तुम एवढा आसे कैपेसिटर चार्जिंग हैला चार्जिंग डिस्चार्ज माने टू वर्ड्स टिके कोन होची ना टिके एसी गुडा होची जोडा कि पल्सेटिंग जे पल्स गुडा अनवांटेड एसी क्वांटिटी गुडा को रिमूव हे जाउची तापर चोक इनपुट फिल्टर डायग्राम करिया कहले भी आराम से मार्क मिल जियो से भितरे कोन लिखि चते कि देखियोनी कि डायग्राम इंपोर्टेंट आउ सिंपल कांसेप्ट लिखि पारिया बेसी भी लिखियो टे ट्राई कर बेसी कम लिखियोनी बेसी माने बेसी भी अधिक लिखियोनी ट्राई करे गोटे लिखिया पे गोटे बेटर लिखिया पे ट्राई करे चोक इनपुट फिल्टर चोक कहले तमरा इंडक्टर को चोक कहउछ हैला इनपुट रे कैपेसिटर ऑलरेडी अच्छी इनपुट रे गोटे चोक
यूज कले माने इंडक्टर यूज कले ये कौन करियो इंडक्टर कौन करे इट इट अलाउस डीसी कैपेसिटर कौन करे इट ब्लॉक्स डीसी सो ये डीसी को अलाउ कला आसीगला डीसी जदि भी किसी एसी कंपोनेंट अच्छी बट ये एसी कंपोनेंट को अलाउ करनी के इंडक्टर एसी कंपोनेंट अलाउ करनी माने कौन कंप्लीटली ब्लॉक करि पारियोनी किछि त आसीबो सो बट कैपेसिटर कौन करे एसी कंपोनेंट को अलाउ करे डीसी को ब्लॉक करे सो कैपेसिटर थ्रू रे डीसी आसी पारियोनी डीसी आसे कौन आउटपुट रे बट किछि भी जदि एसी क्वांटिटी अच्छी का थ्रू रे फ्लो एसी थ्रू कैपेसिटर थ्रू फ्लो से जगह कौन टिके बेटर हेला ठीक अछि आउटपुट टा कौन टिके बेटर हेला टुवर्ड्स डीसी हेला नेक्स्ट हेला दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड एटा तमरा यूजफुल मोस्ट वाइडली यूज्ड फिल्टर होची पाई फिल्टर और कैपेसिटर इनपुट फिल्टर ऑलरेडी एटा थिला आउडे कैपेसिटर हमें इनपुट रे यूज करले हला से ये कोन कोची पूरा प्योर ऑलमोस्ट प्योर प्योर तो नहीं ऑलमोस्ट प्योर प्योर कौन प्योर डीसी हेला सो ए वाला जदि हमें मल्टीपल पाई कैपेसिटर सॉरी पाई फिल्टर जदि मल्टीपल बहुत सारा यूज करिया कहले गोटे प्योर डीसी आसी पारे वन से रीड कर C1 C2 है तब से लिखा है पढ़ दबा ये है तुम चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 रे कौन अच्छे ट्रांजिस्टर्स है चैप्टर नंबर 6 होची ट्रांजिस्टर सर्किट्स ओके ठीक अच्छे मुझे हालिया नेक्स्ट गोटे वीडियो मुझे ट्राई है।